और अब मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करती हूं कि वह दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार वितरण समारोह 2022 का अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें। मंचासीन सभी से भी निवेदन है कि इस शुभ और मंगलमय परंपरा में सहयोग दें। तो हमारी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ सभी के लिए मंगल कामना के साथ हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार वर्ष 2018-19 का मंगलमय शुभारंभ। And very good greetings to all present in this August gathering. Today, ladies and gentlemen, as you know, we are also celebrating the World Tourism Day. तो इस दिवस की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। And as you're aware, the tourism sector, our tourism sector is characterized by a very close and a constant and a constructive cooperation between the government and the various entities, the various players of the travel, tourism and hospitality space. And probably it is this synergy and cooperation that has helped the tourism sector to bounce back in spite of the very drastic impact, the VUCA impact, the volatility, uncertainty, complexity, ambiguity casted by the COVID. And the tourism sector is all ready to bounce back, to rebuild back better. And today, as we present these awards are actually a celebration of the synergy, celebration of the cooperation. And at the same time, we recognize and reward the outstanding performance of the state governments and the various performers from the travel, tourism, hospitality space as we present the Rashtriya Priyatan Puraskar for the year 2018-19. At the very onset, we would like to thank our Honorable Vice President, Sir, for giving in his time. We thank him for dignifying and magnifying this event with his gracious presence. We are having this award ceremony after 2 years. The last 2 years we could not have because of the COVID. But as we were saying, once again we are back in action, and we have the Honorable Vice President, Sir, present with us to bestow this honor on the outstanding performers. तो सभी की तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी श्री जी किशन रेड्डी जी से निवेदन करती हूं कि वह माननीय उपराष्ट्रपति जी को ये शॉल भेंट कर हम सभी की तरफ से आभार, धन्यवाद और सत्कार भेंट करें। और अब मैं आदरणीय सचिव पर्यटन श्री अरविंद सिंह जी को आमंत्रित करती हूं उनके स्वागत संदेश के लिए। Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, Honorable Union Minister for Tourism, Shri G. Kishan Reddy ji, Honorable Minister of State, Shri Ajay Bhatt, my colleague, Mr. R. Rakesh Verma, representatives from the state government, all prize winners of the National Tourism Awards, ladies and gentlemen, it is my privilege to speak to you today on the occasion of World Tourism Day, which has been chosen for honoring and recognizing the efforts of industry stakeholders by conferring the National Tourism Awards. As you are aware, due to the COVID restrictions, these awards could not be organized during the last 2 years. As India celebrates 75 years of its independence, in the Ministry of Tourism commences its
Azadi Ka Amrit Mahotsav iconic week today, the World Tourism Day. All of us are aware that the tourism sector has been greatly impacted due to the COVID-19 pandemic. We have to work hard in partnership with the industry to revive the sector to pre-COVID levels at the earliest. Travel and tourism is one of the world's greatest economic sectors, creating exports, prosperity and employment around the world. And the Indian tourism sector has emerged as one of the key drivers of growth for the Indian economy post-pandemic. We in the Ministry of Tourism, under the leadership of Honorable Prime Minister, are working tirelessly to support the tourism sector. We have been in continuous dialogue with the representatives of tourism and hospitality industry and all stakeholders to discuss solutions to revive the tourism economy by reviving demand through the promotion of both domestic and inbound tourism. We have also prepared a draft National Tourism Policy 2022 as part of the vision of New India on high trajectory of growth and prosperity. The policy aims at improving the framework conditions for tourism development in the country, supporting tourism industries, strengthening tourism support functions, and developing tourism subsectors. India plans to position itself as a major tourism destination during its presidency of the G20 in 2023-24. During this presidency, we aim to showcase India as a must-visit destination at the global level. Recently, the Swadesh Darshan scheme of our ministry has been revamped to develop sustainable and responsible tourist destinations covering tourism and allied infrastructure, tourism services, and human capital development, along with other features. In the Prashad scheme, to further amplify the program vision, a smaller track focusing on basic infrastructure development has been included, leading to larger coverage in terms of destinations and fast-track development of state and regional level important pilgrimage destinations. Employment generation in the tourism sector is one of the key agendas of our ministry, and a new digital initiative called the Incredible India Tourist Facilitation Certification Program has been launched, which aims at enhancing the overall experience of tourists by making available a pool of local trained professionals at tourist sites across that country, and at the same time provide employment to locals near their homes. We have constantly been working to identify niche products. Initiatives have been taken for identifying, developing and promoting niche tourism products in the country to overcome the aspect of seasonality and to promote India as a 365 days destination, to attract tourists with specific interests and to ensure repeat visits for unique products in which India has a comparative advantage. I must share that we in the ministry believe that interaction and coordination between the Ministry of Tourism and the state governments and central ministries like the Ministry of Civil Aviation, Road Transport and Highways, Ports, Shipping and Waterways, External Affairs, Culture and Commerce, among others, will help in establishing better synergy and convergence leading to sustainable and world-class infrastructure development. In order to bring better coordination and synergy among various state governments and union territories, we have recently organized a 3-day national conference of tourism ministers at Dharamshala in Himachal Pradesh. This national conference aims to bring in diverse viewpoints and perspectives from all the states and union territories on tourism development and growth, and also share best practices. To conclude, I would like to congratulate all the award winners and thank Honorable Vice President, Honorable Union Tourism Minister, and Honorable Minister of State for Tourism and other dignitaries for gracing this occasion on the World Tourism Day. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your expressions. And ladies and gentlemen, as respected Secretary Sir also mentioned that the last 2 years were a little dampener because of the COVID. The tourism sector almost came to a halt, and thereby it is very necessary that we revive that interest, we revive the interest of the global tourist. With that in mind, the Ministry of Tourism has come out with 2 newly crafted promotional short films. These new films focus on the message that India is safe and secure, fully ready to welcome the global tourist to this must-see and must-visit destination. Would like to request the Honorable Vice President, sir, to kindly release these promotional films with a click of a remote.
Every step forward is a journey within. I have started my journey. When will you start yours? से लोगों में एक नया जोश, उत्साह, उमंग जागृत हो गई हमारे अतुल्य भारत को देखने की. And now, may I request the Honorable Vice President, sir, to kindly release the India Tourism Statistics 2020, which is an annual publication of the Ministry of Tourism, and this is the 63rd edition, which is right now being released. This provides information on varied aspects concerning tourism sector, which inter alia include inbound tourism, world tourism scenario, outbound tourism, Indian nationals' departure from India, domestic tourist visits, foreign tourist visits, approved hotels and hotel rooms under various categories, and the number of tour operators under various categories. Ladies and gentlemen, today we are also going to be launching a unique book, that's an e-book that has been put together with the participation of people from all across the country. It's an attempt to nudge you to go a little further and explore something that you are yet to see or yet to experience. With contemporary technology and social media integration, this book will surely be able to motivate the tourists to go beyond. May I request once again the Honorable Vice President, sir, with the click of the remote, launch this e-book. पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी से अनुरोध करती हूं सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए. परम श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी, परम श्रद्धेय हमारे मेरे बड़े भाई और जो पर्यटन का काम पूरे भारत में देख रहे हैं, किशन रेड्डी जी, और हमारे टूरिज्म के जो सेक्रेटरी हैं अरविंद जी और एडिशनल सेक्रेटरी वर्मा जी, और सभी प्रदेशों के जितने भी यहाँ पर पर्यटन मंत्रीगण आए हैं और डिग्निटीज हैं, सेक्रेटरीज हैं, और सभी लोग जितने इसमें उपस्थित हैं, भाइयों बहनों, आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार वितरण समारोह के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं. कोविड के कारण पिछले 2 सालों से इन पुरस्कारों का आयोजन नहीं किया जा सका. हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है. इसी के मद्देनजर पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर से अपने आजादी का अमृत महोत्सव की भी शुरुआत की है. आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक शानदार पहल है. यह महोत्सव भारत के उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने भारत को अपनी विकास यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने और उसे मजबूत बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय निरंतर प्रयास कर रहा है. इसी के तहत पर्यटन मंत्रालय अपने हितधारकों से, उद्योग प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत कर रहा है, जिससे कि पर्यटन अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर तरीके से जल्द पुनर्जीवित किया जा सके. पर्यटन मंत्रालय ने न्यू इंडिया के विजन के तहत विकास और समृद्धि के उच्च पथ पर राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 का मसौदा भी तैयार किया है. इस नए पर्यटन नीति का उद्देश्य देश में पर्यटन विकास के ढांचे की स्थिति में सुधार करना, पर्यटन उद्योगों की सहायता करना तथा पर्यटन उप क्षेत्रों का विकास करना है. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पर्यटन मंत्रालयों ने देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए
360 डिग्री दृष्टिकोण अपनाया है। इसी के तहत स्वदेश दर्शन योजना को एक समग्र मिशन के रूप में विकसित करने के लिए एक नया रूप दिया गया है। नए स्कीम में स्थायी तौर पर पर्यटन स्थलों को विकसित करना, जिसमें पर्यटन और उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन सेवा, मानव पूंजी विकास, डेस्टिनेशन प्रबंधन, इन सभी का विकास करना सम्मिलित है। इसी तरह हमारी प्रसाद योजना में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जोर दिया गया है, जिसका लाभ देश के तीर्थ स्थलों को होगा और वहां पर विकास फास्ट ट्रैक पर लाने में भी इसकी सहायता होगी। पर्यटन क्षेत्र में नए रोजगारों के अवसर प्रदान करना हमारे मंत्रालय के प्रमुख एजेंडे में से एक महत्वपूर्ण एजेंडा है और इसके लिए भी मंत्रालय द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल लाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने पिछले सप्ताह पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया। इसका उद्देश्य पर्यटन विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों के दृष्टिकोण को एकत्रित करना और पर्यटन क्षेत्र में उनके बेहतर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना था। हमारे कैबिनेट मंत्री और पर्यटन को हमेशा अग्रसर बनाने का प्रयास करने वाले माननीय श्री किशन रेड्डी जी का एक विस्तृत लेख आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हिंदू अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। अगर आपने इसे पढ़ा नहीं है तो इसे जरूर पढ़िए। इसमें पर्यटन क्षेत्र कोविड जैसी वैश्विक महामारी से जूझकर कैसे बाहर आ रहा है और भविष्य में भारत का पर्यटन क्षेत्र आगे कैसे बढ़ने वाला है, उसके रोड मैप और विजन की भी चर्चा की गई है। इनमें जो एक दो महत्वपूर्ण बातें माननीय रेड्डी जी ने कही हैं, उसका मैं यहां जरूर जिक्र करना चाहूंगा। कोविड से पहले जो पर्यटन क्षेत्र की स्थिति थी, वहां तक 2024 के मध्य तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। वर्तमान में पर्यटन का जीडीपी में हिस्सा $150 बिलियन का है तथा $30 बिलियन का अर्जन हमें 15 बिलियन विदेशी पर्यटकों से सालाना मिलता है। हमने हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे हैं। हमारी नीति में बदलाव के कारण साल 2030 तक इन लक्ष्यों को हम हासिल करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का हिस्सा $250 बिलियन तक ले जाना, 140 मिलियन रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, विदेशी पर्यटकों से $56 बिलियन तक का विदेशी मुद्रा चलन अर्जित करना, 25 मिलियन विदेशी पर्यटकों का भारत में आगमन और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और नेतृत्व में इन लक्ष्यों को हम जरूर प्राप्त करेंगे और भारतीय पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई पर हम ले जाएंगे। अंत में मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देना चाहता हूं और इस विशेष अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति जी ने हमारे बीच उपस्थित रहकर हम सभी का मनोबल बढ़ाया है, इसलिए उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके संदेश के लिए और साथ साथ हमें जानकारी देने का पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो अनेक पहल ली जा रही है, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं पर्यटन के विकास की तरफ, उसको बढ़ावा देने की तरफ, उसके बारे में हमें जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद। And may I now request our Honorable Union Minister of Tourism, Culture and Rural, Shri G. Kishan Reddy ji, for his address. मंच पर विराजमान
सम्माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी, मेरे साथी टूरिज्म मंत्री श्री अजय भट्ट जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म सेक्रेटरी श्री अरविंद सिंह जी, टूरिज्म एडिशनल सेक्रेटरी श्री राकेश वर्मा जी, अलग अलग प्रांतों से आए हुए माननीय मंत्रीगण और अलग अलग स्टेट से आए हुए अधिकारीगण, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टूरिज्म के सभी अधिकारी और टूर एंड ट्रैवलर्स होटल एसोसिएशन के सर्विस सेक्टर के सभी प्रतिनिधि, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सब केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के ओर से, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के ओर से वर्ल्ड टूरिज्म डे का मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को देना चाहता हूं। आज जितना भी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स सम्मानित किया जाएगा, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स आपके द्वारा किए गए डेडिकेटेड, हार्ड वर्क एंड बेहतरीन प्रयासों के पहचान का एक बेंचमार्क होता है इस नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स का। इस अवार्ड्स के द्वारा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, व्यक्तियों को प्रोत्साहन करना बहुत सालों से भारत सरकार का प्रयास है। उसके अंतर्गत आज भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप सब लोगों को मालूम है, कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों का अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया नहीं। दुनिया के कई देशों में भी इसी कोरोना महामारी से प्रभावित हुआ है और फिर एक बार मैं टूरिज्म कम्युनिटी के द्वारा मैं अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान चलाया है, अभी भी चला रहे हैं। लगभग 217 करोड़ 217 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाकर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। भारत हर व्यक्ति वैक्सीनेशन के कारण सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं विश्वास के साथ मैं टूरिज्म सेक्टर का आने वाले दिन में इस वैक्सीन के कारण, कोरोना कम होने के कारण जरूर हम आगे बढ़ते जाएंगे। यह भी जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में इस महामारी से प्रभावित हुआ है, मगर पर्यटन क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। नॉट ओनली इन इंडिया, इन एंटायर ग्लोब आल्सो इस पर्यटन का, टूरिज्म सेक्टर का बहुत बड़ा इफेक्ट कोरोना के कारण हुआ है। हालांकि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसने पहले कई भी अलग अलग समय पर एडवर्टीज क्राइसिस भी से उभरा है। मोदी जी का मार्गदर्शन पे भारत में पर्यटन क्रिएटिव रिस्पांस और इंक्लूसिव ग्रोथ दिशा में हम आगे बढ़ना है, आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में टूरिज्म मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए अभी हमारा टूरिज्म सेक्रेटरी बताए गए 360 डिग्रीज
पर्सपेक्टिव और होल ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसी अपनाएं। पर्यटन विकास में अब सिर्फ मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एक ही नहीं है और एक ही डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे। पहले तो टूरिज्म डिपार्टमेंट सिर्फ इसमें काम करते थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन में मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट एक कोऑर्डिनेटिंग, एक मोटिवेटिंग एंड इन्वॉल्विंग अदर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, ये पहले नहीं था। अभी लगातार टूरिज्म डिपार्टमेंट अलग अलग मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट कर रहे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा नया एयरपोर्ट खोलना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा उड़ान के स्कीम के अंदर नए नए जगह पर सब्सिडी देना फ्लाइट्स में जो लोग जाते हैं, और वैसा ही जो एलिपैड्स भी अलग अलग जगह बनाने के लिए भारत सरकार खासकर जो हिल एरिया में, हिमालय एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में हम प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा हम टूरिज्म दृष्टिकोण से एक मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं। रोड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट भी जो नेशनल हाईवेज का जितने भी रूट्स होगा उस रूट्स पे हम रोड साइड अम्यूनिटीज कर रहे। उस मिनिस्ट्री के द्वारा अलग अलग जगह रोपवेज का आइडेंटिफाई करके इसका काम भी शुरुआत किया है। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा हम मिलकर पहली बार काम कर रहे। पहले हमारा ऑफिस अलग होता था, एम्बेसीज अलग होता था। अभी कोऑर्डिनेशन के साथ सभी एम्बेसीज में हम टूरिज्म ऑफिसर्स को नियुक्त करने के लिए प्रयास किया है। जो टॉप 20 एफटीए फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स रहते हैं उस कंट्रीज में हर एम्बेसीज में पहली बार टूरिज्म ऑफिसर्स का नियुक्त किया है। वो काम शुरुआत भी है। अभी हम धर्मशाला में जब देश भर के टूरिज्म मिनिस्टर्स का कॉन्क्लेव किया है, उस मीटिंग में हम जो जिस 20 कंट्रीज में जो टूरिज्म ऑफिसर्स है उनको भी बुलाया गया, उनसे भी चर्चा किया गया। एक बात, भारत का टूरिज्म क्या स्थिति में है उनके एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए उनके भी भारत बुलाया गए। उसके साथ साथ पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्रीज एंड वाटरवेज के साथ भी जितने भी पोर्ट्स है हर पोर्ट में भी अम्यूनिटीज जो पैसेंजर अम्यूनिटीज होता है इसके भी हम काम कर रहे। उसके साथ साथ डिफेंस का जो बॉर्डर टूरिज्म होगा, एडवेंचर टूरिज्म होगा, डिफेंस के साथ मिलने का प्रयास कर रहे। जो होम मिनिस्ट्री के साथ भी ये काम कर रहे। उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री के साथ जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में भी लगातार चर्चा चल रही है। वैसे ही रेलवे मिनिस्ट्री लगभग मैं बताना चाहता हूं 3600 कोचेस एलोकेट किया है टूरिज्म दृष्टिकोण से। जितने भी सर्किट्स चलने वाले हैं आगे आने वाले दिन में, अभी हम रामायण सर्किट चलाया, दिल्ली से निकल के, अयोध्या से निकल के, नेपाल से मां सीता जी का जन्मस्थान से लेकर तेलंगाना के भद्राचलम तक ये रामायण सर्किट का ट्रेन चला है। वैसा ही बुद्ध सर्किट का चला, श्री कृष्ण सर्किट का चलाने वाला है। और आने वाले दिन में अलग अलग ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कोऑर्डिनेशन करते हुए टूरिस्ट को एंकरेजमेंट करने के लिए अच्छे सुविधा देते हुए इस ट्रेन का सर्किट चलाने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूं जो भी स्टेट्स आगे आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट का टूरिज्म कॉर्पोरेशन हो, हम ट्रेन देने के लिए तैयार है। वो भी एक नया कदम भारत सरकार के द्वारा किया है। उसके साथ साथ और टूरिज्म के विकास और समृद्धि के लिए उच्च स्तर पर न्यू इंडिया के विजन के साथ एक नया टूरिज्म पॉलिसी भी भारत सरकार लाने वाले हैं। आप सब लोगों को मालूम है, मैं सभी स्टेक होल्डर के साथ हम चर्चा किया है, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का ओपिनियन भी लिया है, भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट का भी ओपिनियन ले रहे। जैसा भी
बजट सेशन के समय पर, आने वाले जनवरी फरवरी के समय पर भारत का एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल टूरिज्म पॉलिसी भारत में आप सबके सामने लाने वाला है। उसमें अलग अलग समस्याओं का हल करने का ये प्रयास भारत सरकार इस टूरिज्म पॉलिसी के द्वारा हम करने वाले हैं। Together in being the ambassadors of India and promoting tourism. और देवी सजनों, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा, आज के पुरस्कार आपकी कर्मठता, आपकी प्रतिबद्धता, आपके संकल्प, आपके समर्पण, आपके उत्साह और जोश को सम्मानित करने की तरफ है। तो आइए सम्मान यात्रा को शुरू करते हैं और मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से निवेदन करती हूँ, वो मंचासीन सभी से निवेदन है कि मंच के सामने आकर आज के राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 के लिए। So we begin, ladies and gentlemen, with the first award. That's to the Best State, Union Territory, Comprehensive Development of Tourism in Rest of India. Under this, we have 3 awards, and the first prize conferred on the State of Uttarakhand. Joining us to receive the award is Shri Satpal Maharaj Ji, the Honorable Minister of Tourism, Uttarakhand. Along with him is Shri Sachin Kumble, respected Secretary Tourism, Government of Uttarakhand. पहले पुरस्कार से नवाजा जा रहा है उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर, और श्री सतपाल महाराज जी हमारे माननीय पर्यटन राज्य मंत्री उत्तराखंड, साथ साथ श्री सचिन कुर्वे माननीय सचिव टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इस पुरस्कार को ग्रहण करते हुए। And the second prize is conferred on the state of Maharashtra. Joining us, Shri Dhananjay Savalkar, Joint Director, Directorate of Tourism, Maharashtra. दूसरे पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य को। And the third prize conferred on the state of Telangana. Joining us to receive the award, Dr. V. Srinivas Gaur, the Honorable Minister of Tourism and Excise, Telangana, and Shri Sandeep Kumar Sultania, Principal Secretary, Tourism and Panchayati Raj, Government of Telangana. सभी पुरस्कार विजेताओं को प्लाक और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है। The next award is the Civic Management of a Tourist Destination in India. Once again, we have 3 awards, 1 in each category of ABC. In the category of A, that is for City Municipal Corporation, the winner is Indore, Madhya Pradesh. And to receive the award, we have C. Shri Usha Thakur, the Honorable Minister of Tourism, Madhya Pradesh, along with him, Shri Pushyamitra Bhargava, the Honorable Mayor, Indore Municipal Corporation. Category B is for town, urban local bodies, municipal corporation, and herein the winner is Panchgani Hill Station, Maharashtra. Joining in to receive the award, Shri Luchesh Jayavanshi, District Magistrate Satara, and Shri Girish Venkat Rao Dabkekar, Chief Officer, Panchgani Municipal Corporation. Next category is category C for village and gram panchayats, and the winner is Kalinboot, Goa. Receiving the award is Shri Rohan A. Kunte, the Honorable Tourism Minister, Government of Goa, and Shri Nikhil Desai, Director, Department of Tourism, Government of Goa.
The next award are the airports in Class X cities. It's Hyderabad, Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Greater Mumbai, Pune, Chennai and Kolkata. And the winner is Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata, West Bengal. Receiving the award is Shri C. Patabi, the Airport Director, Kolkata Airport, and Ms. Preeti Tiwari, Manager Corporate Communications, Kolkata Airport. We now have the award to the Best Heritage City, and this is awarded to Ahmedabad World Heritage City Trust under the care of Ahmedabad Municipal Corporation, Gujarat. Receiving the award is Shri Kirit Parmar, the Mayor of Ahmedabad City, and Shri Lochan Sehra. We now have the award to the Best State, Union Territory Comprehensive Development of Tourism. Herein the states are awarded the Hall of Fame Award. These are states which have been the winners for the 3 consecutive years in this category. And today we have 3 states conferred with the Hall of Fame Award. The first Hall of Fame conferred on the state of Andhra Pradesh. Receiving the award, Shri R. Govinda Rao, Executive Director, Government of Andhra Pradesh. And ladies and gentlemen, the second Hall of Fame conferred on the state of Kerala. Joining us to receive the award is Shrimati V. Vigneshwari, the Managing Director, KTDC Limited. And now the prestigious third Hall of Fame conferred on the state of Goa. Receiving the award, Shri Rohan Ekunte, the Honorable Tourism Minister, once again joining us, and Shri Nikhil Desai, Director, Department of Tourism, Government of Goa. माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद इन पुरस्कारों को प्रदान करने का। आगे के पुरस्कार हम बाद में देंगे क्योंकि हम अब सभी माननीय उपराष्ट्रपति जी के आशीर्वचन, उनके संदेश को सुनने के लिए लालायत हैं। तो सभी की तरफ से मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से करबद्ध होकर निवेदन करती हूं, हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करने के लिए। My greetings to everyone present here, and very special greetings on World Tourism Day. Honorable G. Kishan Reddy ji, Honorable Minister of Tourism and Culture, Shri Ajay Bhatt, Minister of State, Tourism and Culture, Shri Arvind Singh, Secretary, Ministry of Tourism, Shri Rakesh Kumar Verma, Additional Secretary, Ministry of Tourism, and everyone present in the audience. I would like to congratulate first the awardees. It is recognition of their hard work. And this is not an award. It has to be seen in the nature of contribution to country's economy and tribute to our culture. I am privileged to be here with you all, and the awards
or for the period 2 years ago. A pleasant scenario at the moment. Last 2 years have been very tough. We could tide over them. In tiding over COVID, now in retrospect, everyone knows. India knows the way. India has done it. No one thought India will do it. And all those who were talking the other language have to correct their psyche. We are out of that difficult period because of genius and innovation of our human resource. I congratulate Ministry of Tourism for celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, iconic week from today. As Governor State of West Bengal, I was chairman of the Eastern Zone Culture Center. I got enough support from the Honorable Minister. I know how deeply committed he is. He has a passion and a mission to ensure that every sector in tourism is on incremental trajectory. Already we are seeing, because of Azadi Ka Amrit Mahotsav, good vibes are generating all over. We are being motivated. We are being motivated, inspired. We are connecting now authentically with our culture also, and fully alive to those historical figures who were not on our radar earlier. This is great enrichment of our current generation. The recognition that has been given to the awardees, let me share with you. I have had the occasion to be in more than 30 countries, seen the world from close quarters, and I have been saying for a long time with firm conviction, we speak of New Zealand, Switzerland, Singapore, Paris, and Rome. If you will reflect seriously, you will find there is nothing that they have which we do not have. You can see it from every perspective. I had the occasion, while being Governor of West Bengal, to see that part of our country which most people may not have seen. I would therefore strongly urge that tourism is an industry that gives a spinal strength to our economy. It generates work for human resource. It allows you to enhance your skills. There is an urge to look beyond our frontiers when it comes to tourism. No harm in that. But we must think for a moment. Have we had our footfall in our country that offers everything that we need to know? And you will find we have to go to lot many places to see what Bharat has been for a number of centuries. Go to any part of the country and you'll find, by way of culture and other situations related to culture and travel, amazing. This is a time when there must be synergical approach between all the stakeholders. We have had technological upgradation in every walk of life. We have to facilitate the traveler. We have to work towards an ecosystem that generates confidence. Happily, the government has taken a number of initiatives, innovative initiatives that have created a wholesome environment for the tourist. I am referring Swachh Bharat is not a campaign. It is rehabilitating our age-old ethos. It has caught up. This has also promoted tourism. If we look around and go to some parts of our country, we will know
we are heaven on earth on this account. And the day is not far, where in the country we will have a look at the cheetah. This is a recent development. This will also generate. We go to Ranthambore for tiger, and for lion we go to Gir. It was a revelation to me that West Bengal, North Bengal has number of sanctuaries and national parks. We have to convert domestic tourism to a level that every person who benefits out of it comes to know about our cultural heritage, our deep roots. And something amazing you'll find. Different region, different language, different religion, different cuisine, but there is that innate connect. And that is the sublimity of our culture. Ranging from the snow-capped peaks of Himalayas, sandy beaches of Odisha, deserts of Rajasthan, deltaic region of Sundarbans, tea gardens of Assam, Darjeeling, backwaters of Kerala, and these are facets only to name a few. Every state of our country is quite rich for such destinations. I would urge that by innovation, we need to impart now a different kind of dimension to tourism. Medical tourism is one, spiritual tourism is another, and there can be a number of health-related aspects in which our country is miles ahead of other nations. All that we need to do is, we need to avail these facilities first ourselves, and then inspire and motivate those whom we know, inside, in the country and outside. Last few years have witnessed massive infrastructural changes for the positive to promote tourism. If you look at our religious places, look at our infrastructure, there is a sea change for the better. Ministry's imaginative initiative, Dekho Apna Desh, is a resounding success. And now that COVID is behind us, we get an opportunity to showcase the diverse culture, heritage, destinations, tourism, and other aspects that reflect on richness of our artisans and other persons. Tourism is an industry which requires highly skilled human resource. Skill development is fundamental to tourism because the functioning has to be seamless. When a person comes as a tourist, the last thing that person wants is hiccups, some kind of a problem. And I go.